not taking any further time, I would again request, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी join किया, कि we'll try to keep this session in a very strictly solution mode. Problems हमने बहुत सुनी हुई हैं, थोड़ा सा solution देके आए. ये directly कोई ना कोई Ministry of Finance से attend भी कर रहा है ये session, plus इसका एक 2-pager जो है वो as part of the pre-budget proposals जो कि upcoming supplementary budget है उसके लिए जा रहा होगा. हमारे साथ आज जो है गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे भी मौजूद हैं. आसिम शहरियार हुसैन साहब, ही CEO इग्नाइट, प्लस इनके टीम मेंबर फैसल मलिक साहब, हु इज जनरल मैनेजर मॉनिटरिंग, एंड बिलाल अब्बासी साहब, जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट्स, ही इज आल्सो देयर. बट सर, जो हमारा फॉर्मेट है ये इस तरीके से है कि हम प्राइवेट सेक्टर को पहले बोलने देते हैं, एंड देन इन द एंड वी विल कम टू द गवर्नमेंट, सो दैट कुछ हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जो कि अवेयरनेस के इश्यूज हों जिन पे आप ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर सकें. So we'll come to you right at the end. So without wasting any further time, we are joined by Mr. Fahad Sheikh, who is the co-founder and the director of the Pakistan Freelancers Association. So Fahad Saab, over to you, and I'll request all of you to kindly keep your comments to a maximum of 8 minutes so that we can finish on time. Over to you, Fahad Saab. Thank you, G. Am I audible? G, you're audible. Wonderful. So a bit about the organization, Pakistan Freelancers Association. I think we started working on this space in 2019, but close to 2021, we became a registered entity. By now, Alhamdulillah, we are a registered entity in SECP. Pakistan Freelancers Association was created for a very unique purpose, and the purpose was very clear, that there's a workforce that's isolated and spread in multiple regions of the country, in very small regions, but it's doing wonderful work. Pakistan is one of the top, we are saying that it's one of the top 3 freelancing ecosystems in the world. And there wasn't really an ecosystem that brings everyone together. So ideally, a safety net for the independent workforce. So we've done a lot of things, alhamdulillah. I think we've met with a lot of stakeholders here as well. We've met Asim Saab as well, in the entire banking in the industry, the entire state. So alhamdulillah, a lot of good stuff has already happened, and a lot of interesting things are in the pipeline, and looking forward to talk to you about the things that we have done, and the things that the country should focus on, just so we can see this industry or this ecosystem prosper. Thank you so much. Thank you, Fahad Saab. I think it's very important that the sector, of course, gets recognized. लेकिन थोड़ा सा जो हमारी कुछ interaction रही है freelancer से, तो वो regulation से डरते भी हैं. So I think we need to sort of create एक इस तरह की environment हमें बनानी चाहिए कि जिसके अंदर I think we should not be afraid of ये जो regulation है, इससे opportunity, इसको as an opportunity लेके चलें rather than a cost. So I think we need to work on. We are still to be joined by some of the panelists, but I think moving on, we are joined by one freelancer plus इनका अपना एक startup भी है. So I have seen a lot of young people that have converted their freelancing jobs into startups. So इसीलिए हमने ये इसको club करने की कोशिश की. So we are joined by Mujibur Rahman. He is the founder of Seekhna Sikhao, and he's a very good trainer. He was also part of SDPI before starting his own gig. So Mujib, if you can give your comments, please. Assalamu alaikum. Am I audible? You're audible. Okay. So as said by Fahad Sheikh Saab, yes, there was issue of recognition and everything, but now we are recognized, and we have some acceptance over the world, and even in the country, in the family, and everywhere, people are now recognizing that freelancing is a skill and freelancing is a career. But still, as said by Fahad Saab, that
we are still afraid of regulations. So SECP, they have, and this PSCB, they have started registering freelancers and everything. But if you see, I still know many of the freelancers who are not registered over there because they are afraid that when we will be registered, we will be taxed highly. And as a startup owner, as a startup founder, I have, a very hands-on experience on this thing that initially when we started, we got served with a tax notice of rupees 9 lakhs. So when we have discussed it with the tax consultant and everything, and those tax bracket, it has reduced to only 1 lakh. So here my concern is that as a freelancer or as an entrepreneur, what we are doing, we are trying to focus on the work we are doing. So in that, we need support from the government. That tax notice or that hefty amount of taxes, they are not, um, justifiable. So this is my one take. Secondly, the infrastructure, the internet and the electricity. These are the biggest issues we are facing. In the cities, when if we do not have this, cable connection, somehow when there is no electricity, we do not have electricity backup. So that 4G connection or these telecom connections, they are very low speed. Even if it is 4G, but it is giving you only 1.8 MBs of download speed, which is, we cannot do any video conferencing. We cannot do any audio conferencing on that 1.8 Mbps. So that infrastructure need to be flourished and that need to be enhanced if you really want that tech industry or IT industry or freelancer industry to improve and grow in the country. Thank you, Mujib. Who is the CEO and founder of Aero Engine Craft Private Limited. Ma'am, we'll really like to hear from you because you have a startup since the start. So how has the current crisis, how can the current crisis, economic crisis, be converted into an opportunity? What are the solutions that you have that can guide the policymakers in going towards improving the climate overall for the startups as well as for the freelancers? Dr. Sara, if you can hear us, you're on mute. Ji, Assalamu alaikum. Thank you very much for inviting me to this forum. One of the prime opportunity that I see in this is basically it's an opportunity to go towards indigenization because we are involved with product development and deep tech technology. So there I see that earlier because there has always been a flair to, whenever we talk about, hardware startups, engineering startups, deep tech startups, there's always preference given to turnkey solutions and basically to import turnkey solutions. And so that's now that we have this economic crunch, we see that there is people are, the economy is now moving towards indigenization and they're moving towards locally developed products because of the lack of, availability of imported products. One of the challenges that of course remains is, imports of raw materials. There's a glitch in that, which generally is an obstacle. It's one of the problems that we also face at times in terms of availability of raw material or tools or consumable equipment. But nevertheless, I think it's a massive opportunity for startups to go into R&D and real product development, because what's been happening before this is that usually just startups and basically zyadatar jo focus hai, that's not on product development because it's a time consuming job. And
the startups are more focused towards, even when you talk about deep tech, they're more focused towards solution development using imported products. Now, that which makes like a turnkey solution. But again, turnkey solutions are not really solutions, because when you don't start from scratch and from the basics of R&D, once you import something, for example, people tend to import so much from China. There's a big, and once it's like एक तो उसमें ये होता है कि there's always there's an element that there's a miscommunication, or what you import you don't get that, and there's a bit of fraud as well. And secondly, when you need after sales services and repair, the companies are stuck because there's no in-house solution, and because they haven't gone deep enough into it, they don't really know how to deal with it. And then importing spare parts and stuff. So I'm basically, मैं सिर्फ अपने उस रेफरेंस से बात कर रही हूँ जिस डोमेन में मैं हूँ और जिस डोमेन में मेरा स्टार्टअप है. We are into developing eco-friendly jet engines, and these are all the all the hurdles that I see. But the good opportunity जो अब नजर आती है वो यही है कि पहले जब हम बात करते थे तो people were not, if there's something they could import from China, they would prefer that. But now they are going towards, local products. And also because of the fact that they can get after sales support and service and customization as well. Because, with R&D, you are so deep enough into the product that you can tailor it to the use of your client. Thank you. Thank you, Dr. Sara. I think it was very insightful, and particularly your point about the shift from services-oriented startups to product-oriented startups, the challenges that you face as a product-oriented startup. I think these are very well noted. So moving on, now I think we can go to the youth enablers. We have Ms. Salwa Akhtar with us, who is the country director, Pakistan Ascend Leadership Through Athletics. And ma'am, if you'd like to say regarding the topic, thank you. Thank you. I hope I'm audible as having some connectivity issues. Salwa, I hope I'm not the only one, but I we're would not able just to. like Yes. to add in terms of the freelancing space. Salwa, we are not able to hear you. Maybe if you can restart and we can come back to you. Okay, is it still the same? I don't know, having some connectivity issues. I think I would request you if you can rejoin the meeting, and by that time I think we can move on to Zishan Shahid Saab, who is the head of program and strategy at the National Incubation Center, Islamabad. Assalamu alaikum, Mahad. Assalamu alaikum, everyone. My name is Zishan. I'm working with the National Incubation Center of Pakistan. National Incubation Center एक पाकिस्तानी इदारा है, which is a public-private partnership. इसको Government of Pakistan, Federal Government of Pakistan through Ministry of IT and Telecom and Ignite, जो कि again Ministry of IT का एक इदारा है, उसके through
इसको फंड करते हो. प्राइवेट पार्टनर्स सच एज जैज एंड टीम अप आर एक्चुअली मैनेजिंग इट. इसका मैंडेट है वो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को या नए बिजनेसेस को स्केल करने में हेल्प करना है ताकि वेल्थ क्रिएशन पाकिस्तान में हो सके. Is there any specific thing that you want me to talk about, or generally on the topic you? सर ओवरऑल जनरली, क्योंकि आप लोगों के पास मैंने देखा है, मैं भी NIC रेगुलरली आता रहा हूँ, सो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग ही आए जो कि पहले फ्रीलांसर्स थे एंड देन दे बिकेम स्टार्टअप्स, और बहुत सारे लोग ग्रेजुएट भी हो गए. सो what do you think that the government needs to do from the fiscal space? क्या बजटरी पॉलिसी इंटरवेंशंस की जा सकती हैं कि ये जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज है इसको बढ़ाया जा सके? अच्छा, इसमें ना वेरी इंटरेस्टिंगली इग्नाइट ने भी रिसेंटली, आसिम शरियार साहब यहीं भी मौजूद हैं, उन्होंने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इस पे एक स्टडी भी करवाई है उन्होंने, और इस पे कुछ राउंड टेबल्स भी इन्होंने करवाई जिसमें बड़ी अच्छी उसमें भी रिकमेंडेशंस जो हैं वो सामने आई थी. मैं फिर भी ऑडियंस के लिए कुछ रिकमेंडेशंस बजट के हवाले से कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ें हम हाईलाइट कर सकें, स्पेशली टैक्सेशन के हवाले से. कि ये वैसे तो अगर हम टॉकिंग अबाउट मिनी बजट, तो मिनी बजट में लार्जर पिक्चर तो नहीं देखी जाती, और स्पेशली टैक्सेस जो हैं वो कम नहीं किए जाते, ज़्यादा किए जाते हैं. बट रिगार्डलेस ऑफ दैट वी कैन हाईलाइट द इश्यूज, वी कैन हाईलाइट द रिकमेंडेशन, एंड एंड देन वी कैन मूव ऑन फ्रॉम देयर. देखिए, पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे इस वक्त करंटली जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस है, पेमेंट का क्राइसिस है आपका. और आई थिंक उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें, और स्टार्टअप से बेहतर वो सर्विसेज और प्रोडक्ट जो है वो इस टाइम कोई जो है वो ऐसी स्पेस नहीं है जहाँ पे हम उसको अगर स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करें तो इससे बहुत बड़ा हमारा मसला शॉर्ट टर्म में तो नहीं लेकिन एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में वो हो सकता है. तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट किया जाए, स्पेशली अपकमिंग बजट में. और वहाँ पे एक टूल जो फैसिलिटेट करने का हो सकता है मेन, वो टैक्सेशन जो है उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. उस टैक्सेशन को हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करने के लिए. सो सबसे पहले एक तो जो चीज़ है वो ये कि ड्यू टू द हायर रेट्स ऑफ टैक्सेस आफ्टर लिमिटेड टैक्स हॉलीडे ऑफ 3 इयर्स का एक टैक्स हॉलीडे मिलता है. सो उसके बाद हम आई थिंक उसको हमें थोड़ा एक्सटेंड करने की ज़रूरत है. एग्जेम्पशंस को जो है हमें थोड़ा और ज़्यादा उसमें हमें रिलैक्स करने की ज़रूरत है, बिकॉज स्टार्टअप्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी का टाइम होता है वो 3 साल से बहुत ज़्यादा होती है. 3 साल के एग्जेम्पशन का टाइम आई थिंक बहुत पहले रखा गया था, लेकिन आई थिंक नाउ इज़ द टाइम टू इसको थोड़ा सा दोबारा देखा जाए, और इसको प्रॉब्ली 3 साल से 5 साल पे इसको अगर कर दिया जाए तो उससे काफ़ी स्टार्टअप्स जो है वो फैसिलिटेट हो सकते हैं. Similarly, as per existing income tax laws, exemptions on dividends and capital gains of venture capital firms are limited to only 3 years. So उसको भी अगर हम maybe 5 to 7 years अगर बजट में लेके जाया जा सके तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. उससे इन्वेस्टर्स को मोटिवेशन मिल सकती है, हमारा जो इंटरनेशनली हम ज़्यादा बेहतर compete कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में. इसी तरह एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो सेल्स टैक्स है हमारा दैट्स वेरी हाई एंड इनकंसिस्टेंट अक्रॉस द कंट्री in different provinces. It creates a confusion in tax environment, और स्टार्टअप्स को वो ड्यू डिलिजेंस और टैक्स कंप्लायंस में काफ़ी प्रॉब्लम होता है. उनके ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी बढ़ जाती है, मार्जिन लो हो जाते हैं. और क्योंकि स्टार्टअप्स यूजुअली द टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स, उनकी सर्विसेज प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसी एक जगह एक प्रोविंस में लिमिटेड नहीं होती. दे आर गोइंग ऑल अराउंड द कंट्री. फॉर एग्जांपल, पिक अप एनी ई-कॉमर्स स्टार्टअप, दे आर डिलीवरिंग अक्रॉस द होल कंट्री, राइट. सो वो जो सेल्स टैक्स का एक थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी है उसको लाने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स के लिए यूनिफॉर्म किया जा सके. एंड फॉर दैट टू हैपन इसमें एक और रिकमेंडेशन भी ऐड करनी पड़ेगी, विच इज टू हैव अ यूनिफॉर्म डेफिनेशन
ऑफ स्टार्टअप्स, उसको इस तरह से कैटेगराइज किया जाए कि उनके लिए इस तरह की एग्जेम्पशंस जो हैं वो लेके आई जा सकें. सिमिलरली ऑन द इन्वेस्टर साइड, आई थिंक स्पेशल टैक्स एग्जेम्पशन होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए भी. मे बी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में उसको ऐड किया जाए, या जिस तरह से भी उसको मैनेज किया जाए, सो कि इन्वेस्टर को इंसेंटिवाइज किया जाए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए. हमारी इस वक्त जो इकोनॉमी है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो बड़ी रियल स्टेट oriented है. So we need to probably move that, we need to move some part of it to the startup side. उसके लिए incentivize करना पड़ेगा इन्वेस्टर के लिए उसको. एक जो चैलेंज स्टार्टअप्स को आता है वो है क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स का. सो और उसके हायरिंग में एंड रिटेंशन में. सो अगर स्टार्टअप्स अगेन जो हम जिस तरह भी इसको कैटेगराइज करें, जिस तरह भी इसको डिफाइन करें, स्टार्टअप्स के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज का इनकम टैक्स में भी कुछ किसी तरह की एग्जेम्पशन मिल सके, तो स्टार्टअप्स के लिए क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना और रिटेन करना जो है वो ज़्यादा इजी हो जाएगा. ये आई थिंक कुछ रिकमेंडेशंस टैक्सेशन के हवाले से हैं which could be very useful. There, as I mentioned, there are other issues as well, other regulatory issues हैं. फाइनेंस में, फॉर एग्जांपल फाइनेंसिंग में, डेट फाइनेंसिंग, स्टार्टअप्स जो हैं वो डेट फाइनेंसिंग को इस वक्त नहीं यूज कर रहे, कैपिटलाइज नहीं कर रहे उस पर, क्योंकि डेट फाइनेंसिंग इस वक्त बैंक्स में इस तरह से स्ट्रक्चर हुई है विच इज नॉट वेरी फेवरेबल टू स्टार्टअप्स. जो उसके टर्म एंड कंडीशंस हैं कोलेटरल के एटसेट्रा वो स्टार्टअप्स उसको मीट नहीं कर सकते. सो फॉर एग्जांपल अगर आईपी को अगर आप एज अ कोलेटरल एक्सेप्ट करना शुरू कर दें बैंक्स, so that would be very helpful as well. So ये आज आप कुछ recommendations हैं, कुछ policy interventions हैं जो बजट के थ्रू और विदाउट बजट अगर उनको implement किया जा सके, that will be very helpful for the startup ecosystem. Thank you, Dishant Saab. So Salwa, I hope we can hear you now. आपकी अगर हम intervention सुन लें, क्योंकि last time I think we couldn't make anything out of it. Salwa, you're on mute. I think Salwa is still facing some issues, so we can move on. मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त इमरान जी. Sorry, I see if you can hear me. So I think जी, let's see if I'll. Yes, we can hear you. Please carry on. G. So I'll keep it very brief, as my colleague Zishan has already mentioned more or less, the issues related to taxation. But I think mera focus zyada impact par hoga, and generally in terms of the government, the state, the private sector has been very supportive in terms of establishing the incubation centers and supporting startups. But now in terms of policy intervention also, we need to see what is it that we can do to graduate quality startups that have a sustainable business plan and are investor ready as well. One of the issues startups really face is that there's an issue in research and development. There's no focus on R&D. In fact, there's less support on R&D as well. So that is something that we need to support them and build their capacity in research and development. Till we don't support R&D, we can obviously, the impact of innovation, we cannot fully benefit from the fruits of innovation. Secondly, with reference to the freelancing vertical, I think given that Pakistan is one of the economies जहाँ पे हमारे freelancers बहुत ज़्यादा contribute करते हैं, and I know that there are a lot of programs that have been involved in upskilling their skills. It's no longer about website development or app development, but we need to fully make sure that our freelancers are also tapping into the high skill roles that are out there, as well as analyze and see that what is the time that, for example, typically a freelancer spends on micro gigging, moonlighting
full-time or micro work and see what kind of support can we give to our freelancers that इनका जो एक typical एक freelancer का journey होता है उसको हम ज़्यादा smooth कर सकें और जो popular freelancing verticals हैं उनको हम high skill की तरफ उन पे focus करें और उनको high skill की तरफ उनको support दें regulatory challenges की भी हमारी काफी बात हो गई है and I think Bangladesh is one country from where we can learn because Bangladesh ने अपनी despite having a population lesser than ours, they were really able to reap from the benefit of women's economic participation in the workforce. And that is how they are benefiting from that fruit. So till we don't have programs that support women entrepreneurs, women freelancers, or women don't contribute to the economic workforce, we will still, we will not be able to fully reap the benefit of development. So that is something to, have programs to incentivize women. There is a shortage of skills in the market. There is a shortage because hamara high illiteracy rate, half of the country is still, we don't, it is not contributing towards production. So there is a real dire need that we need to upskill people, we need to invest in our women, we need to we need to launch programs that promote their participation in the workforce. And I think that's about it because, and in terms of IT exports, I think, again, we have so many examples from our neighbors. India, 1950s, India started investing in its IT exports. And if you look at the numbers, Pakistan ki 2 billion ki IT exports hain, to India ki aaj 80 billion ki IT exports hain. So really, there are some things that our neighbors have also done right, and we can, there's a lot that we can learn from them. And I think jo ek cross-cutting cheese, India, Bangladesh, even China, that is one thing is their participation of women in the workforce that they've really put at the center stage. So that is something again that we can learn. And yeah, that's it. So if there's anything else specifically you'd like to ask, please put सकते हैं. Thank you, Salwa. So moving on, we can now invite Imran Jatala Saab. He is currently the project director for the National Incubation Center for Aerospace Technologies. Over to you, Imran Saab. Thank you very much, Asam and STPI. I'm Imran Jatala. I'm working with the National Incubation Center for Aerospace Technologies. Ignite पाकिस्तान में NITs को नर्चर कर रहा है. Ignite मिनिस्ट्री ऑफ IT का एक इदारा है और उसने पाकिस्तान में 7 NITs एस्टैब्लिश किए, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, जो कि बहुत अच्छे स्टार्टअप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और पाकिस्तान में स्टार्टअप फंडिंग क्रॉस 300 मिलियन लास्ट ईयर. तो इग्नाइट का बहुत एक मेजर कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी स्टार्टअप इकोसिस्टम को फिगर करने में और उसको नर्चर करना. एंड the particular one, NICAT, National Incubation Center for Aerospace Technologies, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ IT, पाकिस्तान एयरफोर्स एंड नेटफुल कंसोर्शियम. तो यहाँ पे आपको IT की, एरोस्पेस इंडस्ट्री की और पब्लिक सपोर्ट तीनों मिलती है इस एक इदारे के अंदर. और यहाँ पे हमारा तो पर्पस की एरोस्पेस और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करवाना है. मेरी जो सजेशंस है वो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से ज़्यादा है, बिकॉज उसमें एरोस्पेस और दूसरी टेक्नोलॉजी कवर होते हैं. तो किसी भी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पाकिस्तान में जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स हैं इट्स लेस देन 2% ऑफ आवर एक्सपोर्ट, वेयर चाइना में इट्स मोर देन 30%. और इसमें अगर अच्छी सक्सेसफुल एग्जांपल्स देखें आज सब दुनिया में, तो वो वियतनाम एक एग्जांपल है जिसने एक डेकेड के अंदर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में IT को, एक नेशन को ट्रांसफॉर्म किया है. तो ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है वियतनाम के, कैसे एक डेकेड के अंदर एक कंट्री अपने आप को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में एक लीडिंग एक्सपोर्टर बना सकता है. इंडिया की अभी सलवा ने बात की अबाउट इंडिया. दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. सलवा रियली रीइंडोर्स दैट कि विमेन पार्टिसिपेशन के बगैर कोई इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती. बांग्लादेश उसकी प्राइम एग्जांपल है हमारे लिए. और दूसरा है कि इंडिया की IT एक्सपोर्ट $150 बिलियन है. वो पता नहीं क्या सारा कुछ जमा करके उसके अंदर स्टार्टअप भी और सब मिला के देयर कोटिंग एट $150 बिलियन.
जबकि सऊदी अरेबिया की ऑयल एक्सपोर्ट्स $110 बिलियन, तो ओवर नेक्स्ट डेकेड ऑयल एक्सपोर्ट्स नीचे जा रहे होंगे और आईटी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रहे होंगे। तो दैट्स स्ट्रेटेजिक चैलेंज फॉर अस एज वेल कि हमारे नेबर में एक इकोनॉमी अपवर्ड पाथ पे इस रीजन में एक ऐसी डायमेंशन में ग्रो करी जिसमें हम ग्रो नहीं कर रहे। तो थैंक यू वेरी मच सारा भाई। और आवाज़ भी आ रही है आज भाई? जी जी बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। आई डोंट नो, थोड़ा वॉल्यूम अप करें। जी मैं एम ट्राइंग। इज इट बेटर नाउ? यस, नाउ इट्स बेटर। अवेयरनेस मैं डॉक्टर सारा थैंक यू वेरी मच। मैं एग्जांपल कोट कर रहा था कि इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स $150 बिलियन है और सऊदी अरेबिया की ऑयल एक्सपोर्ट्स $110 बिलियन। और अगर अगले एक डेकेड में देखें तो ऑयल एक्सपोर्ट्स कम होना शुरू हो जाएंगी एज द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अल्टरनेटिव एनर्जी, और आईटी एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही होंगी। सो पाकिस्तान के लिए भी एक चैलेंज है, और नेस्टेफ, हक्सन एयरपोर्ट्स, इग्नाइट और हम मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में हाईटेक इंडस्ट्री, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो कर सके, जिसमें एरोस्पेस भी शामिल है। अब पाकिस्तान कहाँ से सीख सकता है? दैट्स वन गुड मॉडल इज वियतनाम। और अगर हम पॉलिसी इंसेंटिव्स की बात करें आज भी, तो वो सारे इंसेंटिव्स हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए होने चाहिए पाकिस्तान में। आई वुड सजेस्ट कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से शुरू करें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारा फोकस होना चाहिए। बिकॉज इसी से वो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्ट होगा, इसी से ग्रोथ अनलॉक होगी और इसी से इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होगी। हम एक एग्री कंट्री हैं, बट हमारा एडिबल ऑयल का इंपोर्ट बिल $5 बिलियन से ज़्यादा है। इसी तरह टी का इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है। हम पल्सेस तक इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ताकि हमारा जो लोकल फार्मर है वो चीज़ें प्रोड्यूस करे जो कि इस इकोनॉमी को चाहिए, जो कि इस नेशन को चाहिए। एंड सेकेंड लेवल पे हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करें जो कि हम सी पैक के थ्रू या डायरेक्ट जो हमारा लिंकेजेस हैं पोर्ट के, वो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका को हम एक्सपोर्ट कर सकें एंड गोइंग बियॉन्ड टू यूरोपियन एंड यूएस मार्केट्स एज वेल। तो ये दिस इज माय सजेशन ऑन दिस। थैंक यू इमरान साहब। मैं सिर्फ इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि आई थिंक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन शायद करना काफ़ी सारी WTO के एग्रीमेंट्स की वजह से पॉसिबल ना हो, बट आई थिंक जो नीकैट टाइप ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स कर सकते हैं एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सर्टन टेक्नोलॉजीज, वो ये है कि हमारी कंपेटिटिवनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। और आई थिंक के दो लोगों को तो हमने यहाँ पे मिलवा दिया है, आप लोग पहले भी जानते होंगे, बट आई थिंक डॉक्टर सारा एंड इमरान साहब मिलके जो है वो कोई जो है कंपेटिटिव एरोस्पेस मार्केट के अंदर लाजमी कुछ ऐड कर सकते हैं। सिर्फ एक पॉइंट जो मेरे जहन में था, शान साहब ने एक बात की कि हम लोग रियल स्टेट ओरिएंटेड हैं। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन में रियल स्टेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट जो है ये भी गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से ही होती है। जब गवर्नमेंट पॉलिसी थी तो इन्वेस्टमेंट CNG में गई। जब गवर्नमेंट पॉलिसी आई थिंक द गवर्नमेंट कैन ड्राइव a sort of investment into certain sectors, IT हो सकती है, जिस तरह ये प्रोडक्शन की बात हुई, मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई, तो ये सब भी चल सकता है। जी, वी आर वेरी लकी टू बी जॉइंड बाय अवैस जैदी साहब। ही इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द हाइव। इसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आई थिंक इंट्रोडक्शन में ही काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो सर अगर काइंडली थोड़ा सा टाइम में आप हमें बता सकेंगे हाउ कैन दिस क्राइसिस, जो करंट क्राइसिस है, इसको हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रीलांसर्स एंड स्टार्टअप्स, कंसिडरिंग कि आप लोग स्टार्टअप्स को घर देते हैं, प्लस आप फ्रीलांसर्स को भी जगह देते हैं। तो ओवर टू यू अवैस साहब, यू आर ऑन म्यूट सर। Assalamu alaikum ji, and sorry for joining. I just landed in Lahore. I was on flight, so I थोड़ा 10-15 minute देर से join किया. Some excellent points. Because I also run a startup called Credit Par. We provide financing to small businesses and underserved communities. देखिए, आप भी बहुत सही बात कर रहे थे, अभी जो आप बात कर रहे थे on the matter of government distortions created by government policy. तो हमारा इस वक्त सबसे जो fundamental issue है, I look at it, the current crisis as an amazing opportunity. Again, we have to put the house in order. All our policy, हमारा structural framework पूरी economy का is absolutely distorted. There's complete rent-seeking behavior across all segments, right? आप
I have friends, and conversation is the guy who works 14 hours a day, runs a factory, deals with 100 agencies, suffers the pain. Maybe he takes home 30 crores, 40 crores a year. His brother, who dabbles in real estate, does, gets up at 11, has his fun, goes out to work for an hour, a couple of hours a week, and makes the similar amount of money buying and selling plots and making buildings. So, ये बहुत real issue है economy distortion का. So I think we need to take this opportunity and need to make sure कि आपकी distortion खत्म हो जाए, आप competitive pressure करें, जो regulatory bodies हैं वो pain ना create करें, वो facilitating environment create करें. So yeah, I don't know if you're gonna default or not default. That's a very secondary है. अवारी ले लें, ठीक है? So लाहौर में, ठीक है? So बिल्कुल, तो main अवारी. So apologies for that. So basically, this is a great time for us to. It's a great time for us to fix the basic issues in economy. इसके अलावा जो taxation वगैरह पे, I don't say that it should be tax free or whatever, but if you want to encourage investment, then you need to allow people to जो उनके venture losses होते हैं वो tax offset allow करना चाहिए. I think that's very key to the model. Secondly, one of the biggest problems in our taxation structure is not the tax rates itself. It's the concept of withholding tax, right? So what it creates कि एक नई startup होती है, it is earning some money, but it's paying anywhere between 8 to 15% to the government to finance its cash flow. Maybe it won't be profitable for 3 years or 13 years, but it's accumulating that advanced tax in the government coffers. It's losing out its own cash flow, its own revenue. And that's a very substantial chunk of the revenue, right? And getting tax refunds in Pakistan is pretty much next to impossible. So it's a very, very difficult play. So these are some of the things that are severely wrong with the country. अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ regulatory aspect की, right? अगर आप एक legal काम कर रहे हैं और आप regulatory license वगैरह लेके सब कुछ कर रहे हैं, then there will be absolute, compliance, pains, everything. But अगर आप वही काम without any regulatory oversight, without any taking license कर लेंगे, nobody's going to come after you. If you unless it's something really, really blows up in some space, कोई आपके आके नहीं पूछेगा. मैं ending, we are regulated lender, so I have a huge cost of compliance and everything. और वो सारी चीजें कोई मसला नहीं होता. But the more but for everything I'm doing, कि unregulated lenders are doing it without any compliance, without any fair practices, and nobody's bothered to follow up on them or check on them or to close them down or prosecute them or stop them. तो आप illegal factory चलाए, कोई नहीं तंग करेगा. आप legal factory चलाए, आपको shops act वाला आएगा, factory labor inspection आएगा, regular tax के different local and federal, they will harass you. So this is a time for us to really look, and we talk a lot about fancy stuff like ease of doing business in a country like Pakistan, but we gotta make it simpler and easier. Like today, you want to go set up a company in US, you want to go set up a company in Dubai, it's like a 4-day, 3-day, very clean-cut processes. Everything is digitized. Everything is documented. There's no harassment. Here's a policy, you comply, or nobody's going to say something. You don't comply, they'll come inspect, fine you. But everything is above board. So, अगर हम भी अपने पास ये कर लें, देखें, a lot of people are moving out. I mean, last night I was with a friend. Half a dozen of them are either in the process of relocating or they've already moved most of the assets and they're moving out of the country. But चलें 5 लोग 10 लाख 20 लाख लोग चले जाएंगे, but we have another 220-30 million people going to be around. So the opportunity is there. I think we should seriously look at our economy, our structure, make it easier to do business. आप startup करें, आप small business करें, आप freelance करें. All this has great opportunity. Just let them work. Don't create roadblocks. जब कोई जायज काम पाकिस्तान में करना चाहे proper तरीके से, that is where the biggest problem is. So my thing is, withholding tax is absolutely criminal, especially या अगर आपने करना ही है तो आप quarterly उसके refunds देना शुरू करें advance tax के, या at least साल के end पे आप 30 days के अंदर दे दें. 3 साल 5 साल नहीं मिलते लोगों को. So withholding tax is absolutely criminal. आप जिसकी income है उससे बिल्कुल आप पूरा tax ले लें.
broadening of tax base. I'm sure, all SDPI seminars and working papers talk about it. I think that's critical. I think एक regulatory ease लेकर आनी चाहिए, uniform code हो, one window operations हो, harassment of entrepreneurs should stop. That would be just my entrepreneurs, businessmen, or anybody who wants to do an honest business, a honest work should be able to do that. अगर आप ये तीन चीजें ensure कर लें, I think things will get a whole lot better. लेकिन funding सब आ जाती है whenever there's return. There's money will follow that. I don't think that's a problem. So yeah, that's about it from my side. Thank you. Thank you, Vaisab. I think this was very enlightening. I think के वो जो regulation की stick है, उसके साथ कम से कम कैरेट लाजमी आनी चाहिए, तो फिर जाके I think it will make sense. So I think we are done with all the private sector participants. So we can move on to Mr. Asim Shahriar Hussain Saab, who is CEO Ignite, and then of course if Mr. Faisal Malik and Bilal Abbasi Saab will like to also add to it, then we look forward to hearing from them as well. Over to you, Asim Saab. Assalamu alaikum, everybody. Actually, I was just on a call with Secretary Saab. So everybody made some nice and relevant comments, and I know a lot of these speakers today. In fact, I think all of them. So, देखिए, point ये कि पाकिस्तान में हम किस तरह dollars बढ़ाएं through either increasing exports through our IT firms and freelancers, or attracting dollars through our startups in the form of investments. इसमें हमने study कराई थी Ignite ने, और उसमें we have come up with policy recommendations for State Bank, FBR, SECP, IPO, जो हम उनसे share भी कर चुके हैं. जो ज़्यादा issues हैं related to startups है कि उसमें उनको forex accounts allow नहीं किए जाते, so they can't retain their investment in dollars. वो सब रुपये में convert हो जाता है. फिर वो जो उनके investors होते हैं, they prefer investing in holdcos abroad. So instead of those dollars coming to Pakistan, those dollars stay abroad, और वो उतना ही remit करते हैं जितना कि उनके यहाँ पे startup की operating cost होती है. So it just trickles down over a couple of years, which of course reduces the forex inflow. लेकिन अगर हम उनको startups और freelancers को foreign currency accounts allow करे State Bank, where they can keep the money in dollars till it is cash. जब cash out करें वो PKR में करें, जो भी उस वक्त का exchange rate होगा. So that will encourage more dollar inflow to our startups and freelancers. और even repatriation में आपको पता है कि making international payments to vendors के, let's say अगर startup कोई अपने foreign vendor को उन्होंने payment करनी है किसी import के लिए, किसी अगर वो advertise करते हैं Facebook पे या Google पे या कोई और foreign vendor को वो engage करते हैं और उनको payment करनी पड़ती है, तो making international payments is also hassle for them. उस पे भी यानी repatriation के issues हैं, तो maybe State Bank should allow up to 35% of inflows to be repatriated. Okay, of course, you can't repatriate everything you have inflowed. तो उस पे कोई limit लगा दें कि you can repatriate up to a certain percentage. So we will come up with these proposals before the budget also. और FBR के केस में जिस तरह आप ये बता रहे थे कि जी उनको टैक्स नोटिसेस आते हैं और फिर sometimes very heavy taxes जो बाद में फिर correction करके बहुत कम हो जाते हैं. तो इस तरह के issues हैं कि instead of taxing we should be coming up with cash rebates for our freelancers. कि आप जितने ज़्यादा remittances पाकिस्तान में लेके आएंगे, आपको let's say 1-3% आप define कर दें different slabs के, if you bring $10,000 a year तो आपको 1% rebate मिलेगा, if you bring $20,000 a year 2% rebate, $30,000 a year 3%. इस तरह के आप
different incentives define करें for freelancers so they bring more of their dollars in Pakistan. और indigenization और local product development की तो बात की उन्होंने, but these are long-term things. Short term में इनका impact नहीं आएगा. और by the way, Ignite ने last year अपना innovation fund announce किया था और उसमें हमें कोई 800 से ज़्यादा proposals आई हैं different thematic areas. और उसमें हमारी टीम ने अभी तक कोई around 100 proposals shortlist की हैं जो उनकी detailed proposals और presentations होंगी, and then we are going to select between 10 to 20 projects every year for product development. लेकिन this product development takes anywhere a couple of years. ये कोई short term thing नहीं है, इसका impact long term में आएगा. Yes, long term में हमारा focus होना चाहिए कि हम बजाय हर चीज import करने के we at least जो low tech products हैं वो हम locally develop करें बजाय बाहर से import करने के and wasting a foreign exchange. तो we should, जिस तरह NECAT है और हमारे कुछ और भी NICs हैं जहाँ पे makers labs हैं where we encourage our startups to develop products other than mobile apps and portals and software only, कि वो hardware related work भी काम करें. इसके अलावा अच्छा देखिए, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जी इंडिया की तो $100 billion से ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स हैं और पाकिस्तान अभी तक 2.5-2.6 billion पे बैठा हुआ है. One major reason India has so much in IT exports कि उन्होंने incentives offer किए foreign IT firms to set up their development centers in India. दुनिया के सारे आप IT giants देखें, Microsoft, Oracle, Google, Facebook, Cisco, etc. ये IBM, उन्होंने अपने वहाँ development, Amazon, उन्होंने अपने development centers इंडिया में खोले हुए. तो हमें भी इस तरह के जो हम ये IT parks बना रहे हैं इस्लामाबाद, कराची और दूसरे सिटीज में, ये तो होने ही चाहिए मल्टीनेशनल्स के लिए, ताकि वो उनके लिए एक क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिक्योरिटी हो, हाई क्वालिटी ब्रॉडबैंड हो, फैसिलिटीज हो, which will motivate them to come set up their development centers in Pakistan. They will hire local talent, उनका international talent भी आएगा और उससे आपकी exports ज़्यादा stimulate होंगी, क्योंकि of course those development centers will be getting paid through dollars from their parent companies. तो इस तरह की चीजें हमें सोचने की जरूरत है. I also have Bilal and Faisal with me. So Bilal, if you have any comments on how we can improve investment in our startups, हम अपने NICs के through, अब तो 8 NICs हो गए, and we are actually taking them through the whole incubation cycle. लेकिन future में भी also planning an accelerator for early stage, for funding of early stage startups. Kabhi access to capital is an issue for many Pakistani startups. आपके पिछले सालों में जो let's say $700 million से ज़्यादा की investment आई है पिछले 2 सालों में, 98% of it has been by foreign investors. Local investors को भी अब हमें educate करने की ज़रूरत है कि आप बजाय सिर्फ real estate और stocks में invest करने के, startups provide you a good investment option, and we need to show them that you can actually make a better ROI through investing in a high growth startup. तो इस तरह की different चीजें जिस पे Ignite काम कर रहे हैं. तो I would have Bilal any other points which I've missed here. Bilal? Asim sir, I think you have covered almost everything. Just couple of things जो कि मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे. देखिए, हम capacity building की एक और upskilling की बात करते हैं. हमारे यहाँ इस वक्त हमने 2 चीज़ों के ऊपर काम करना है. कैपेसिटी बिल्डिंग या अपस्किलिंग के ऊपर काम करते हैं तो आप एक स्पेशलाइज्ड या हाई टेक स्किल्स सिखाने की बात कर रहे हैं. पर एट द सेम टाइम अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया ने वॉल्यूम के ऊपर भी काम किया, यानी डेप्थ पे काम किया है. उन्होंने वो बैक ऑफिस सपोर्ट प्रोवाइड की है तमाम बड़ी कंपनीज को जिन्होंने पाकिस्तान या इंडिया के अंदर अपने रिसर्च सेंटर्स या और चीज़ें बनाई हैं. तो हमें अगर आप देखें तो इग्नाइट इसी चीज को सामने रखते हुए 2 प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहा है. एक आपने डिजिटल स्किल्स देखा है, वो बहुत हाई एंड ट्रेनिंग्स नहीं है लेकिन इट्स प्रोड्यूसिंग अ वॉल्यूम. तो हम 3 मिलियन रजिस्ट्रेशंस अगर डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम 3.2 मिलियन के करीब की हैं
Similarly, we are going for a high-tech development languages के ऊपर हम लोग एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं कोडी स्किल्स के नाम से, जिसमें आइडिया यही है कि अगर हम 10,000 लोगों को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें एंड एट मिनिमम $25,000 वो एनुअली कमाते हैं, तो इट विल ऐड $250 million आपकी इकोनॉमी में ऐड होंगे। तो ओवरऑल इग्नाइट जितने भी प्रोग्राम कर रहा है उसमें पर्पस यही है इन दी एंड के किसी तरीके से हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। चैलेंजेस में वी हैड अ आइडिया के ऑलरेडी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, और इसी वजह से आप अपने जितने भी स्टार्टअप्स देखेंगे मैक्सिमम अपनी होल्डकोस बना रहे हैं सिंगापुर में, DFIC में या डेलावेयर में। उसके पीछे रीजन यही है कि पाकिस्तान का रेगुलेटरी रिजीम्स इतनी टफ हैं। सो व्हेन वी इंटरेक्टेड विद स्टेट बैंक, FBR, SCCP, IPO, इन सब के साथ भी जब हम इंटरेक्ट करते हैं, देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, सो मेनी लॉज। सो व्हाट वी डिड कि हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन की कि इश्यूज रेगुलेटरी हैं कौन कौन से, आफ्टर टॉकिंग विद सर्टेन स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स, इन सब के साथ बात करने के बाद फिर हमने ये एनालिसिस किया कि बेंचमार्किंग की कि दुनिया में ये काम किस तरीके से हो रहा है। फिर पाकिस्तान के उन लॉज को आइडेंटिफाई किया गया कि जो हर्डल्स हमारे पास मौजूद हैं वो क्या क्या हर्डल्स हैं, उनको किस तरीके से रिवर्ड अगर किया जाए तो इम्पैक्ट क्या आएगा। ये पूरा एक स्टडी करके व्हाट वी डिड कि हमने ये तमाम स्टडी जो है शेयर कर दी विद रेलेवेंट रेगुलेटरी बॉडीज। फिर हमने उनके साथ मीटिंग्स की और उनको समझाया कि हर एक पॉइंट के पीछे बेसिक असल मकसद क्या है। पाकिस्तानी आगे भी शायद कमाते जाएंगे, बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते जाएंगे, लेकिन वो सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएगी नहीं। वो इन फॉर्म ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट तो आ जाएगी, लेकिन फिर हम एग्जिट्स की बात करते हैं पाकिस्तान में। आई डोंट सी एग्जिट्स नियर फ्यूचर में, कोई यूनिकॉर्न वो भी हम नहीं देख पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट कि पाकिस्तान के अंदर कंपनीज आकर अपने आप को उस तरीके से रजिस्टर ही नहीं करती हैं। अगर कर भी रही हैं तो वो कल को अगर एक यूनिकॉर्न बन भी जाती है, पता चलता है करीम की तरह वो एक दुबई का हमारा स्टार्टअप था जी, और वो एक यूनिकॉर्न बन गया। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमें हम आप सबके साथ वो स्टडी शेयर कर देंगे सो दैट एवरीबडी हैज एन आइडिया कि हमारी उसमें पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या है। और जब तक उन रिकमेंडेशंस पे अमल नहीं होता है, वी डोंट सी कि हम जितनी भी ऑपरेशनल लेवल के ऊपर चीज़ें कर लें, इन दी एंड रेगुलेटरी में आप सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ना इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आएंगे, ना इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी, और कैपेसिटी बिल्डिंग भी आप करेंगे तो बाहर का काम करते रहेंगे, उसमें भी ऑपरेशनल कॉस्ट सिर्फ पाकिस्तान आ रही होगी। तो इन दी एंड वी वोंट बी एबल टू सपोर्ट आवर इकोनॉमी इन अ वे जिसमें हम चाह रहे हैं। सो दीज आर माय 2 cents। Thank you, Bilal Saab. So I think we have got a very good set of recommendations, not only for the upcoming budget, but overall long-term economic policy for Pakistan. So I think we have time for another round. If I can go back to the original format, Fahad Sheikh Saab, if you would like to add something. एक क्वेश्चन आपके कमेंट के ऊपर आया हुआ है, ये कुत्सिया मुनीर साहिबा हैं पार्टिसिपेंट्स में, एंड शी हैज रिटन के here a participant was saying that Pakistan is top 4th position in freelancing. However, with respect to revenue generation, it is at 7th position. What can be done to improve the position with regards to revenue generation? So अगर इस हवाले से और जनरली भी आपका कोई कमेंट हो तो काइंडली। जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आई थिंक जो आपका कमेंट था अबाउट फ्रीलांसर्स रेगुलेशन से डरते हैं, आई थिंक मसला रेगुलेट करने का नहीं है, मसला इज अनसर्टेनिटी। फ्रीलांसर्स अनसर्टेनिटी से डरते हैं, and that's the problem that primarily we are focused on, is that the communication and the progress that has to be bilateral, and जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक कम्युनिकेशन चैनल बनवाना विद द वर्कफोर्स और सबको साथ लेके चलना, I think this can bring a tremendous amount of progress in this sector, and eventually regulate is a good thing. That is something that we have to convey. For the longest time, when I 2009 2010 की बात कर रहा हूँ, when I started, I used to think I'm doing a crime doing freelancing, कि यार पाकिस्तान में नहीं कमा रहे, बाहर से कमा रहे हैं, कोई ना कोई जुर्म कर रहे हैं, right? Then this is primarily awareness, right? So we have to solve that. And I think regulation is not something that the freelancers are afraid of. We are more than happy to play our own part.
जहाँ तक रेवेन्यू जनरेशन की बात है, देखिए, the conversation has to move from logo designing to AI. I think most of my colleagues very rightly pointed कि जो the skills that we offer are and the money that we're generating are very fair. But point is कि how do we offer the skills that earn more revenue? And that requires effort on both parts. As an organization, PAFLA should also play a role, but as state, we should first identify what are the sectors that could generate more revenue and create a workforce that could probably offer that skilled labor. Besides that, जहाँ तक और जो policy interventions की बात है, I think one of the most fundamental things that I think we should start from is what is a freelancer. That is something that I've always been saying. We have to define that. What is a freelancer? What is a platform economy? What is a gig economy? The conversation has to start from there, and then maybe see what are the properties of different sectors that we can utilize. Some of the points that I think we should focus on when driving policy is first in financial inclusion. Second, I think very rightly pointed by Mujib, is access to infrastructure, internet, tools like VPN are a very big issue. And third is capacity. I think one of the things that not just people who are already freelancing, but there's a big sector who wants to get into the sector. So I think the entire journey has to be covered. And the third most important point is that there has to be something about communities, because communities play a very, very important role in progressing these ecosystems. And I don't see any policy that has any incentive for communities working in this sector. We have to prioritize communities as well, because there's a sense of trust, and communities work for the collective well-being of the country. So the communities also have to be supported. I think these are the most pressing points that I would like to add. Any question you have, I think I did answer the relevant question, but any specific other question, happy to answer. Thank you. Thank you, Fatsab. So if we can move on to Dr. Sara Qureshi, if you have any last minute thoughts on the topic. Ji, bilkul. Some things came to my mind, and I obviously there are a few things I strongly agree with. I always say that the only industry that thrives in Pakistan is the real estate. So iski wajah se jo investment hai na, that's all diverted to that. So that's also one of the challenges other industries face. And फिर किसी ने बात की थी sales tax की. तो अब वो जो हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्टअप्स हैं, डीप टेक स्टार्टअप्स हैं, उनको भी ये मसला फेस करना पड़ता है. हमें भी इनिशियली करना पड़ा, because when you want to import some machinery and equipment for development, so there are different, either if you want to import as a company, आप अभी तक अपनी सेल्स कर नहीं रहे होते, लेकिन आप जब तक सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर ना करें, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते. अगर आप एजेंट के थ्रू कराते हैं, तो that costs you a lot, maybe not double, but less than double the amount that you would pay. And then they have some less taxation for importers, for manufacturers import versus traders import. But again उसमें भी वो sales tax का issue आ जाता है. तो that is something कि जो deep tech startups हैं, उनके लिए जो policies हैं SCCP की, उसमें ये कोई रेगुलेशन होनी चाहिए कि उनको भी मिनिमल टैक्स रेट्स पे इंपोर्ट की इजाजत हो. और दूसरा जो एक चीज मैंने देखी है वो ये है कि जो इन्वेस्टर का लोकल इन्वेस्टर कंफर्ट लेवल है, दैट्स वेरी लो फॉर एनी डीप टेक स्टार्टअप और इंडस्ट्री के. उनको समझ ही नहीं आती, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजीज, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो जैसे सलवा ने बात की थी अपस्किलिंग की, फ्रीलांसर्स की, आई थिंक इन्वेस्टर्स की भी थोड़ी अपस्किलिंग होनी चाहिए कि उनकी एक मतलब उनकी एक अंडरस्टैंडिंग को तो प्रोडक्ट ब्रॉडन अप किया जाए ना, कि उनको डिफरेंट टेक्नोलॉजी समझ आए. द मैक्सिमम दे गो टू इज IT,
IT से आगे उनको कोई टेक्नोलॉजी या कोई प्रोडक्ट समझ नहीं आता और उसमें उनका कंफर्ट लेवल नहीं बनता. And then again, product development requires like, a lot of infrastructure, like huge investment into machinery and equipment, which is not possible for startups in terms of the financial constraints as well as the time constraints. Now, what happens is, अगर हम बाकी दुनिया को देखें तो वहाँ पे जो मॉडल फॉलो होता है वो जनरली ये है कि these huge infrastructures are basically with government organizations, with defense organizations. And here in Pakistan, it is the same. We have big, huge infrastructures. We have the aeronautical complex, Kamra. We have HIT, HMC, TUSTEC. I mean, I can name many. But unfortunately, they are only operating at 30% of their capacity. They're only catering to strategic needs. दुनिया में ये होता है कि एक strategic division होती है जो कि 30% capacity को meet करती है, and the rest 70% of that expertise is given to given in the open commercial market, which is something missing here. And अब यहाँ पे ये मसला है कि अगर आप किसी को हम अप्रोच भी करते हैं किसी बड़ी फैसिलिटी को for some kind of specialized product development, they don't know how to deal with it. उनकी भी अपस्किलिंग की जरूरत है, बिकॉज अभी रिसेंटली तो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक प्रेशर डाला है कि they have to go commercial and they have to raise money to sustain themselves because government is short of money and जो भी हमारे बजट क्राइसिस हैं, लेकिन उनको कमर्शियल काम करना ही नहीं आता. उनको they don't know how to deal for public work, and they don't even have the pace or the expertise to develop products or components for startups. So that's also one area that needs to be attended to. वहाँ भी एक तो there has to be a policy for commercial work, and then also they need some training on how to do commercial work and use huge infrastructures and machineries and equipment to their full capacity, rather than कि उनको सिर्फ डिफेंस के लिए यूज किया जाए और 30% capacity पे ऑपरेट करके वेस्ट कर दिया जाए. I mean, I'm talking all this from my personal experiences, because when we want to get some precision engineering done, obviously हर चीज के लिए we cannot invest like 10 million rupees and import a machinery and then set up and then do it. It's again a lot of time and a lot of money. But when we approach these organizations, they are absolutely clueless. They have the expertise, they have the capacity, they have the equipment, but they don't have the good sense to do it, unfortunately. So I think this side needs to be seriously looked into on a policy level as well. Thank you, Dr. Sara. I think your point is especially with regards to the strategic manufacturing units. I remember there was a time when HMC3, the heavy mechanical complex in Texila, used to have a special facility for sugar machinery manufacturing, as well as there were 2 or 3 boilers that were manufactured there as well. So I think that is particularly important, that we need to sort of harness the capacity that is there. So moving on, Mujib, if you will like to add something. You're on mute. So maybe I think Mujib is having some issues connecting. Wes Zeddi Saab, do you have any last minute thoughts
or any specific policy recommendations that you'd like to give? Yeah, so I mentioned the withholding tax, ease of doing business by a single window. I think the तीसरी चीज ये है कि we should allow थोड़ा सा ना liberalization of the foreign exchange reserve. For example, if I'm bringing dollars in, what policy तो है 35% की, but उस पे काफी बात भी होती है. I think that needs to be made a bit easier to open and operate those accounts. या आप कम से कम ये अलाउ कर दें कि ओपन मार्केट से लेके आप कन्वीनियंस के साथ ट्रांजैक्शन कर सकें, राइट? तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज. तो अगर और दूसरी बात है, आई थिंक कुछ बड़े अच्छे पॉइंट्स वैलिड सारे नहीं बोल रहे थे, बट देखिए टैक्स ये जो है ना, इन्वेस्टर गेट स्मार्ट व्हेन दे सी रिटर्न्स. राइट नाउ अगर एक इन्वेस्टर को टी बिल में डाल के 18% मिल रहा है और बैंक या K+2 पे उसको कहीं प्लेसमेंट मिल रही है फंड्स की 20-22% का रिटर्न अगर उसको इस वक्त मनी मार्केट्स में मिल रहा है, तो आपको 35-40% का रिटर्न चाहिए जस्टिफाई करने के लिए, या तो आप उसको कोई मैसिव टैक्स एडवांटेज दें. सो टैक्स इंसेंटिव्स फॉर द इन्वेस्टर शुड बी देयर कि राइट ऑफ्स अगेंस्ट एडजस्ट कर सकें आपने, बिकॉज इफ दे मेक एन इन्वेस्टमेंट इन सम मार्केट, so एक startup में तो there's a high chance of failure, so they should be able to offset their tax liabilities against such losses if they are incurred, right? And they should be allowed to carry over for up to 10 years maybe. So ये एक specific और please add करें foreign exchange के ऊपर जरा liberalization, and दूसरी ये tax write-offs tax write-offs for the investors, and should make it very very simple even as an individual. Sure. So thank I you. shouldn't have to create a fund ना. मैं angel के तौर पे भी मैं एक check लिख रहा हूँ. If it goes away, if it's lost, then I should be able to adjust that against my tax liability. तो ये इसको please देखिए. Thank you. Thank you, Vesab. So, Salva, if you'd like to add something. Gee, I would just like to sum up taxation. I won't talk much because we understand that there are some conditions attached to the grants or the loans that the government of Pakistan seeks. और उसी हिसाब से अगर आप वर्ल्ड बैंक का जो हमारा $400 million का लोन है, उसमें withholding tax की certain conditionalities हैं जिनको हम I believe that go beyond the scope of this discussion. But however, coming towards the startup ecosystem and the freelancing ecosystem, I think like I highlighted earlier, we need to strengthen our digital skills program. We need to upskill our freelancers to fully reap the benefits of the fifth industrial revolution. We need to engage the Pakistani white collar diaspora in boosting local innovation. And we need to strengthen collaboration between the white collar diaspora overseas and promote synergies. We have seen a rising consumer spending in e-commerce taking the larger share. So now we also need to look at those sectors that contribute to our structural issues. For example, education. We need to develop maybe a policy framework and system and programs that जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम education technology startups को support करें ताकि long term में हमारे जो economic structural issues हैं उनको भी ये startups cater करें. Similarly, fintech is also one untapped area जिस पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा innovation हो रही है और बहुत ज़्यादा gateways आए हैं, and we are benefiting from that, but there's a lot more work that needs to be done. In terms of investor education, जिस तरह डॉक्टर सारा ने भी कहा कि investors को भी educate करने की ज़रूरत है, but investors से ज़्यादा हमारे startups को educate करने की ज़रूरत है. यहाँ पे एक common misconception है कि startups funding raise करते हैं, they think they've achieved everything they could, but they don't realize that their journey has just started. And once they've given 30% of their company away, nobody is willing to invest down the line. So I think we need to come up with programs that kind of protect the interest of the startups as well and educate them because there is a dearth of that understanding in our ecosystem. And that's it from my end. Thank you, Salva. So moving on, Zishan Saab, if you'll have some last minute thoughts. जी थैंक यू आहद. देखिए इसमें चीजें तो इतनी ज्यादा है कि लास्ट मिनट थॉट्स तो इसमें नहीं हो सकती. ये तो अभी काफी
there's a lot to be covered. But I think दो चीजें मैं एंड में कवर करना चाहूंगा और उस पर स्ट्रेस करना चाहूंगा. एक ये कि हमने बहुत ज्यादा, जैसे आपने इसके सेशन के शुरू में ना यू मेंशन्ड के हम चैलेंजेस की बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेट्स लेट इट बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड. तो मैं जस्ट वांट टू से दैट कि जहाँ पे चैलेंजेस हैं तो वहाँ पे उसी में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं. सो फॉर एग्जांपल हमारी 100 मिलियन की पॉपुलेशन जो है ना वो अनबैंक्ड है, व्हिच इज अ ह्यूज चैलेंज कि बैंकिंग नेट में नहीं है. बट एट द सेम टाइम दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर फिनटेक स्टार्टअप्स एंड फॉर न्यू फिनटेक प्रोडक्ट्स to come out, for the government to make regulations to make it easier to get fintech license, etc etc. Similarly आपके हेल्थ में इतना गैप है पूरे मुल्क में, तो इसका मतलब हेल्थ टेक में आपका बहुत ज्यादा स्कोप है स्टार्टअप्स के लिए. एजुकेशन का गैप बहुत ज्यादा है, तो सिमिलर वर्टिकल के स्टार्टअप्स के लिए उसमें एग्री में एटसेट्रा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये सारे जो भी चैलेंजेस हैं आपके मुल्क के, ये आपके स्टार्टअप्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं. जैसे बड़ा इन्वेस्टर जो है वो इस वक्त, अगर वी स्पोक अबाउट रियल एस्टेट एंड ऑल, वो अभी रियल एस्टेट से नहीं निकल बाहर आ पा रहा. सो नए बिजनेस के लिए, नए जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये मौका है कि जो स्पेस अभी एम्प्टी पड़ी हुई है, इस स्पेस को वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें इन डिफरेंट इंडस्ट्री वर्टिकल्स में. दूसरी बात ये कि हम अगेन, क्योंकि आई हैव टू मेंशन इट अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज द करंट क्राइसिस दैट वी बीन फेसिंग in a medium term, which is जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का हमारा क्राइसिस है. तो इसमें भी, इस चैलेंज में भी आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि देखिए, आप अपने पोर्ट बिल इस तरह भी कम नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपको उसके लिए पूरा आपको शिफ्ट करना पड़ेगा. आपका जो पोर्ट बिल मेन है वो फ्यूल का है और जो ऑयल का, और वो ऑयल से 2/3 आपका इम्पोर्ट बिल वहाँ उसका ऑयल का, तो वो तो आप अभी चेंज नहीं कर सकते. उसके लिए तो आपको बड़े मेजर्स लेने पड़ेंगे जो बड़े लॉन्ग टर्म है कि आप उसके डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी पे आप उस पर जाएं. सिमिलरली आपका जो बाकी जो इम्पोर्ट बिल में आपके कैपिटल गुड्स हैं, तो कैपिटल गुड्स भी अभी आप फिलहाल अगर आप उनका इम्पोर्ट अगर आप पूरी तरह से आप या कम कर देंगे तो आपकी इंडस्ट्री पे अफेक्ट होगा. तो करना ये है कि इस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये है कि आपने अपने एक्सपोर्ट्स को जो है वो आपने बढ़ाना है. इम्पोर्ट्स अभी आपके कम नहीं हो सकते, और दैट्स वेयर यू नीड टू लुक एट markets which is beyond western countries, right? मैं आज सुबह मेरी मुलाकात हुई थी, फॉर एग्जांपल जो हमारी अभी मिशन की हेड जा रही हैं सेनेगल के लिए, तो उनसे भी यही बात हो रही थी कि these are sorts of market that we could actually, our startups could actually look into exporting our services. फॉर एग्जांपल वहाँ भी वेस्टर्न अफ्रीका में भी फिनटेक के वही प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे यहाँ फिनटेक के प्रॉब्लम्स हैं. और ऐसा नहीं है कि दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि कोई पाकिस्तानी कंपनी जो है वहाँ पे कोई सक्सेसफुली इस तरह का एक्सपोर्ट मॉडल लेके आ रही होगी. हमारी अपनी गवर्नमेंट का इदारा नादर है जिसने सेकंड टीयर और थर्ड टीयर कंट्रीज में काफी ज्यादा अपनी सर्विसेज जो हैं वो एक्सपोर्ट की हैं. सो देयर इज अ कनेक्शन देयर, राइट? सो आई थिंक ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है इन सब चैलेंजेस में जो हमने डिस्कस किए हैं, और एंड विद द राइट प्लानिंग, राइट एटीट्यूड, एंड ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ government in terms of regulations and all, we can make a lot out of it. Thank you. Thank you, Zishan sir. So if I can now request, I can now request Asim Shahriar Hussain sir to maybe give his final thoughts and conclude the session, sir. हाँ जी, देखें इसमें दोनों आपकी सप्लाई साइड है, डिमांड साइड है. सप्लाई साइड पे आप कैपेसिटी बिल्डिंग इन द शॉर्ट टर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द लॉन्ग टर्म, और डिमांड साइड पे मार्केटिंग है, पार्टनरशिप्स हैं, कोलैबोरेशंस हैं. हम डिफरेंट इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्टार्टअप्स को लेके जाते हैं. जाइटेक्स में हमने कनेक्ट किया अपनी 10 स्टार्टअप्स को डिफरेंट इन्वेस्टर्स के साथ. अभी लीप में भी हमारी 8 स्टार्टअप्स गई हुई हैं. तो गोल इज टू क्रिएट linkages between Pakistani startups and international investors and customers. दूसरी इंसेंटिव्स की बात हो रही थी, तो जिस तरह अवैस कह रहे थे कि we have also proposed to FBR के they should give tax breaks to local investors in startups, के जिस तरह आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं को टैक्स ब्रेक मिलती है, जितनी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं उसको आप उस पर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है.
तो उसी तरह लेट से एक लोकल इन्वेस्टर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है तो उसको कोई इंसेंटिव होना चाहिए कि उस पर उसको कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और ये NICs को भी हम कह रहे हैं कि दे नीड टू फोकस मोर ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन, कि आप इन्वेस्टर्स को ROI दिखाएं ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स, के instead of real estate and stocks and other investment options, startups offer a better option for them, especially the high growth startups, because they will grow not just locally but internationally. So these are certain areas where we need to focus. और आप भी अगर कोई proposals हैं SDPI की और किसी और speaker here, feel free to email them to Ignite. We will be preparing some pre-budget proposals for the ministry, and hopefully many of those recommendations will get approved in this year's budget if government is serious about increasing forex coming into the country through both startups and freelancers. Thank you, Asim Saab, and thank you everyone for joining us. I think हमारी जो टीम notes taking कर रही है उसको काफी juice मिल गया आज. अच्छा, sorry, एक और चीज मैं भूल गया. Sir, please. देखें, we also need to focus on creating specialists. देखें, इस वक्त दुनिया में there's a shortage of 3 million cyber security professionals globally. फिर gaming and animation is another area जहाँ पे काफी demand है और उस पे future में Ignite एक center of excellence भी plan कर रहे हैं. तो फिर आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, दीज आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिसमें ग्लोबल डिमांड भी है. तो हमारी यूनिवर्सिटीज को दे नीड टू फोकस ऑन ट्रेनिंग आवर ग्रेजुएट्स इन दीज एरियाज, मेकिंग स्पेशलिस्ट इंस्टेड ऑफ जनरलिस्ट वेयर दे हैव टू compete with other countries. और तो उसमें फिर कॉस्ट पे आ जाते हैं वो. तो ऑफ कोर्स फिर आपकी जो जब आप कॉस्ट पे compete करेंगे तो आपकी अर्निंग हर्ट होगी. तो we need to upskill our graduates and freelancers so they focus on new technologies. और जहाँ पे शॉर्टेज है ग्लोबली, साइबर सिक्योरिटी है, गेमिंग है, एनिमेशन, ब्लॉकचेन, इस तरह की टेक्नोलॉजीज में हमें ट्रेनिंग पे फोकस करने की जरूरत है. Thank you, sir. So just like I was mentioning, कि हमारी टीम जो है इसका एक 2-pager डॉक्यूमेंट बनाएगी, एक पॉलिसी पेपर, एंड वी विल बी शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू एज वेल एज विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डायरेक्टली, कि ये मेन रिकमेंडेशंस हैं. दिस वेबिनार इज पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वेबिनार्स जिसके मेन 4 फोकस एरियाज गवर्नमेंट की तरफ से हमें आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें इकोनॉमी, एनर्जी, फ्लड्स एंड देन इलेक्शंस, ये 4 मेन एरियाज हैं. सो इसमें फॉर द फर्स्ट part we have covered the economy, and then next up we will be shifting to energy. Next jo webinar hai that will be on energy, and then the other 2 will be catered for. So thank you very much all of you for joining us. It was a pleasure having listened to all of you. कुछ लोग चले गए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, and we will keep you posted regarding the outcomes, and thank you very much. So Allah Hafiz. Bye.